Hello, welcome guys. Welcome to Wisdom Wednesday, and this is our second episode, and I'm very exciting. We are achieving our target slower and slower, but whatever we're targeting, we're getting over there. आज का दिन बहुत interesting है. Like it's very close to me. It's true, my true love. I love doing solving problems and doing coding, and this is what we're going to do today. The the main motive of this session is, or like this stream is to learn something new. So if you think you already knew this thing, like what we are doing, and you have everything, all the knowledge, and you're not going to learn anything, so probably you will like to skip this stream. This won't be purely coding stream. Like यहाँ पे basically हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर या प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम रियल लाइफ की कुछ जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करती हैं एंड व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड देम। लाइक इट कैन बी वेरी स्टैटिक थिंग जो आपके डेली लाइफ में यूज होती है, बट इतने आप यूज टू हो गए कि आपको आप सोचते भी नहीं हो कि ये काम कैसे करता है। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों पे काम हम कोड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम कुछ नई चीज़ें भी ट्राई करेंगे, जो मैं स्ट्रीम के एंड में बताऊंगा कि नेक्स्ट स्ट्रीम में हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं आगे। इट विल वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ कमिंग बैक टू द लर्निंग पार्ट, सो दिस होल वेंसडे इज एक्चुअली आई वांटेड टू नेम दिस लर्निंग वेंसडे, बट राइम नहीं कर रहा था। विजडम वेंसडे ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, तो आई नेम दिस विजडम वेंसडे। एंड if you already know this thing and there's nothing new to learn for you, right? Probably you just open the stream and uh, concentrate on what you want to learn. So if you're planning to do some certification, probably give this time, the stream time, to focus on that certification and learn about that. If you're focused, like if you're thinking to build your own startup, so probably you can spend some time and uh, start working on your startup thing or anything else. तो मेन मोटिव ये है कि हम जब ये स्ट्रीम खत्म करेंगे तो हम कुछ नया सीख के जाएं। दैट्स इट। आज का हमारा टॉपिक है, वी विल बी कोडिंग एलिवेटर्स। विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट वीक जहाँ से हमने शुरू किया था। दिस इज गोइंग टू वेरी रॉ। लाइक आई डोंट कम प्रिपेयर फॉर दिस सेशन बिकॉज मुझे भी सीखना है, मुझे भी जानना है ये चीज़ें। अगर मैं कुछ मिस करता हूँ तो बेसिकली आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। एंड जब व्हेन यू डूइंग इट लाइव तो आप थोड़ा सा और फोकस्ड हो जाते हो कि हाँ, चीज़ें थोड़ा ढंग से करनी, सही से करनी है। Yep. So let's start our coding Wednesday, or like Wisdom Wednesday, and have a happy learning. Hey guys, this is Shubham Gautam. Welcome to Let's Talk About It. वेलकम गाइस। सो आज हमने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे पहली बात, आज हम टाइम पे, एक्चुअली हम टाइम से पहले, वी वर शेड्यूल्ड फॉर 10:15 बट वी आर एट 10:11। न्यू अचीवमेंट फॉर अस। ओके, सो we'll be going back to our elevators problem. Last time जब हमने इस चीज़ को छोड़ा था, तो just to like rewind or recap, or probably to the users who are new to this, उनको बताने के लिए, viewers जो फर्स्ट टाइम में यही देख रहे हो, कभी ना कभी तो एक दो नए बंदे आएंगे, उनके लिए it helps them. We are trying to build an elevator. So it's not a real elevator. We are trying to define, like trying to dissect the logic behind an elevator. So हम कैसे उसे करने वाले हैं कि we will be building some UI elements like HTML elements in React, CSS, and with the help of JS and CSS, and फिर हम एक logic लिखें उसके behind पे, and then we'll trying to move the elevators up and down and open and close, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस हैं एलिवेटर्स के, वी ट्राई टू कवर इट ऑल। एंड आज का तो प्लान ही है कि ये स्ट्रीम तब खत्म होगी जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इट्स अ वेरी चिल स्ट्रीम, सो रिलैक्स, pick up your drinks, whatever you like milk, drink it, and without further ado, let's start it. So लास्ट टाइम हमने अपना अपार्टमेंट बना दिया था विथ 10th फ्लोर, and we have created our dial pad also with 0 to 10 number and option to open and close the lift, right? Now we need to build couple of more things here. First we need a lift.
ऑब्वियसली बिना लिफ्ट के और बिना एलिवेटर के ये सब कुछ बेकार है। सेकंड, हमें एक तरीके से लाइक वी नीड टू इम्प्लीमेंट कि वो ऊपर और नीचे जा सके, मूव कर सके डिफरेंट फ्लोर्स पे। एंड थर्ड, द लिफ्ट गेट नीड टू बी ओपन फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड क्लोज बैक बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। एंड फिर उसको हमें इन नंबर से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लाइक if I click on open, then it should open, and if I click on close, it should close. The next thing what we have to do is like and before that, like a core option we are missing right now, which is option to click on up and down. So imagine this dialer you're seeing here, 987654321, is inside the lift, right? Since depicting this inside the lift will be difficult because इतना raw space हमारे पास है नहीं, so we are assuming dialer को हमने बाहर shift कर दिया, and बट एवरी फ्लोर पे हमें एक अप एंड डाउन बटन चाहिए, बिकॉज अगर आप लिफ्ट के लिए जाते हो तो आपको प्रेस करते हो कि विच फ्लोर यू वांट टू गो, सो इट्स आइदर अप और डाउन। अब वी हैव टू बी लिटिल स्मार्ट हियर, लाइक कि टॉप फ्लोर पे देयर वोंट बी एनी अप, बिकॉज कहाँ जाओगे भगवान के पास। और डाउन फ्लोर पे डाउन का ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हम नरक पे अभी जा नहीं रहे हैं। तो या शुरू करते हैं हम अपने हर एक फ्लोर पे अप एंड डाउन बटन देना। बिफोर दैट हमें क्या करना है कि हमें अपना लिफ्ट का साइज थोड़ा बड़ा करना है, बिकॉज इतने से स्पेस में सब कुछ फिट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो हो जाएगा। तो हम शायद हमने वो चीज़ फ्लोर पे लेके थी, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग बिकॉज आई नीड लुक इट बैक। दोस्तों एक बार फिनिश फिनिश होगा ना तो पूरा कोड मैं जाके गिटहब में चेक इन कर दूंगा, एंड आई शेयर माय गिटहब लिंक किया। उसके बाद उसके ऊपर आप और मैं कोड कोड सैंडबॉक्स का लिंक भी डाल दूंगा, तो एंजॉय करना, मज़े करना। ओके, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, लेट्स मेक इट 200। ओके, वाह ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? Okay. ये ऑटो रिफ्रेश नहीं हो रहा, which is weird thing, supposed to। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो आप देख सकते हैं कि ये इसकी हाइट वेट तो बढ़ रही है, समझ में आ रहा है बिकॉज फ्लोर्स की हमने हाइट बढ़ाई, बट साइड में जो हमारा डायलर है वो भी ऊपर नीचे हो चुका है, पूरा यूआई बिगड़ चुका है। तो हमें क्या करना है कि इसको भी फिट करना है। नाउ इफ यू लुक बैक हियर कि we have enough space to fix an elevator and fix the option to go up and down, and probably we need to give more height because generally floors की height ज़्यादा होती है और width actually width width कम होती है obviously, और डेप्थ तो हम बना नहीं रहे हैं, there's no 3D here, so थोड़ी बड़ी एलिवेटर करते हैं। करने के बाद हम ऐड करेंगे बटन्स अप एंड डाउन के। आई थिंक आई नीड टू डू दिस थिंग मे बी। ओके, सी, ओके सो जो फ्लोर में buttons, it's part of floor, so there's two ways to implement this. Either we can create a components folder inside the floor, and there we can add buttons up and down, or we can make it more generic and like a very generic components, like we can create a components called folder called buttons, and it will we have option to create okay, here's the buttons, and then we'll create a new file called buttons dot .sx, और इसको अभी करते हैं, रिनेम कर सकते हैं, rename it to floor button। Yeah, तो हमारे पास फ्लोर बटन हो गई, तो एंड ऑब्वियसली वी नीड सम सीएसएस, तो एक फाइल क्रिएट कर ही देते हैं।
प्रॉब्लम क्या है? और इम्पोर्ट भी कर ही देते हैं। अलग कर रहा हूँ यहाँ पे। ओह सॉरी। ब्लूपर्स नहीं बनाने हैं तो कोशिश करेंगे हम ये छोटी मोटी गलतियां ना करें जो हमेशा हमेशा हमसे हो जाती है। ओके तो सीएसएस फाइल को हम जीएस फाइल में इंपोर्ट करेंगे सीएसएस में। सीएसएस में कर सकते हैं एज अ मॉड्यूल बना के, बट आई थिंक यू कैन नॉट यूज style.css css for that. Or you can do that. So basically we can create multiple css modules and we can import it, and just like जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जेएस में काम करता है वैसे जेएस में काम करता है वैसे ऑब्जेक्ट्स हमें स्टाइल्स में मिलते हैं, and we can use those objects like those class names and variables defined in the imported class. Okay, so वो हम सब बाद में देखेंगे। हम वो भी कवर करेंगे धीरे धीरे। मेरे प्लान प्लान में सब है। हमें टेलविंड सीएसएस भी करना है, कि मुझे वो देखना है। अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है टेलविंड, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट। So we'll discuss that also someday. And we also be building in the next session itself extension for VS Code. And that extension, what it will do is it will recommend my videos to you. But we will be learning to make extension, and you can use that uh, knowledge to build anything, any kind of extension you like, right? हम सैंपल में वो करेंगे। इच्छा तो आपकी रही जो करना करना। Okay, so constant for button is equal to, now हमें एक बटन चाहिए। So basically this component will return JSX component, and since we're not using TypeScript, we don't need to define the return type. But like this is the first session, तो I'm using JSX, और next session में हम फिर TypeScript use करने लग जाएंगे। को भी हम समझेंगे क्या काम करता है। I know some basics of TypeScript like few things, but overall like the whole thing कैसे काम करता है मुझे भी थोड़ा समझना है, तो मैं भी वो समझूंगा। And you can ask your questions, so it will be like मुझे भी like let's make it more interactive. So you can use live chat to put down your question and we can discuss over them. If I don't know something, next coding Wednesday, we'll talk about it. Okay, so floor button, it will return a button. So we can make this very simple. Button element हमने use कर लिया है, and that will take some text. So we'll say ops dot payment response. Ops dot कई बार ये auto correct भी ले लेता है हमारे ops dot label. There's no label, so props will come from here, and that will have label. So हम जहाँ से basically we are creating so last stream में हमने ये discuss किया था, and if you've not seen that, you can go back and check. Props is the properties you pass from your parent, or like जहाँ पे आप ये component को initialize करोगे. And I'll show you how to pass a props. So remember the name, we are using label, and we need some more properties also. We need an on click. You want to so this is an interactive component button, like so when you click on this, a user will interact with these components. So if you're showing an image or just a text, right, the user won't be performing much interaction to it. But if it's a link or it's a button, they become a more interactive component जहाँ पे user click करता है, and then it performs some actions accordingly. So now what we want to do with these buttons is to move, it's to call the controller. There will be a controller. They will be calling the up and down for a particular floor. The up action is called or down action is called. Correct. So that's why we need it. Now we just return it. Oh, sorry. There's no return since we are taking model wise. Export default to a button. Right. So okay, now we have floor button, and this is one. This is, we can define this as up button.
And when we can actually we can just keep a slow button right here. I mean, it will be better to keep one component. हम दो component में define कर सकते हैं up and down button, but they are performing same thing and we can handle the reaction. So the action is called click. उसका जो reaction है वो हम handle करना पड़ेगा. वो action reaction हम handle करेंगे flow.jsx में, which is just here. Okay. Now हम यहाँ पे करना चाहते थे. We want the button here, right? So import और button. Don't worry about the right screen because the moment I start typing is यहाँ पे live reload हो रहा है तो it is supposed to fail, so that's why it's failed. And don't worry about it. The moment our code is in the right form, right shape, it will just reload back to the right view. और अगर आपके इस कोड लिखने के बाद भी वो रिफ्रेश नहीं हुआ या फिर वहाँ पे एरर्स आ रही हैं तो मतलब कोड में कुछ गड़बड़ है, उसको फिक्स करना चाहिए. यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ. Today was so a bad day. I'm stuck in a one problem in work from like last 3-4 days. पता नहीं कैसे होगा. उसको बहुत बुरा लगता है कि जहाँ पे किसी बहुत ही मतलब डम सी प्रॉब्लम में फंस जाते हो कि हमने यहाँ पे जैसे ही स्टेटमेंट करेक्ट हुआ रिफ्रेश हो गया वी गेटिंग द राइट वैल्यू. Now since we want this both the flows button up and down, what we can do is we don't need to use display layout here because you'll ask why we don't need it. I'll tell you why. Because of the, okay so हमें अलर्ट आ रहा है यहाँ पे बट हमने तो एक्शन परफॉर्म किया नहीं. क्लिक अलर्ट क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमने एक डमनेस दिखाई है दोस्तों. तो हम wait a minute. Okay, so just don't load. क्यों कहता हूँ मैं ऐसा यार? Basically I don't want to load this thing. My page is kind of unresponsive now because it is a small mistake. Okay. Okay, because I'm opening this in the browser, that's why it's keep calling that alert. Okay, let's see disabling alert from page. इसलिए दोस्तों console.log यूज करना चाहिए. हमने सेटिंग देखी है. disabling. तो if अगर मैं यहाँ पे console.log यूज कर रहा होता तो मुझे ये इशू नहीं आता. और just something which I did and ये प्रॉब्लम आ गई है. See this like work. मैंने ओवरराइड करने की कोशिश की, काम नहीं किया because I'm not using window maybe that's why. Oh, and hopefully this will be okay. Let's do this thing. Let's make this as this. Do that.
Well, let's get started. Mhm. Okay, we need a code back. I have an option here. We can go to history and okay, to move this tab here. Okay. Cool. So the thing is, this is a blocking view alert, and that's why this whole thing is blocked. And now what we want to do is that we don't want this particular window, and we क्यों करता हूँ मैं Okay, let's do this thing. Go to sources and move this and close this and go back to our. Okay, I can go back to our draft. Oh, no, I want this. Progress क्यों छोड़ा आपने? I just wait for 5 minutes. Okay, uh, okay. अरे अब हमेशा मिनी क्लिप बनाने के लिए क्यों आता रहता हूँ? हम Chrome dot tabs से सकते हैं. Chrome dot tabs. So we have app में details है और app मुझे CSS या function. Yeah. Okay. So photos, task manager, and kill a tab. Okay, I don't want to kill a tab. The process. Okay, दोस्तों एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, so we have to
Go back to dashboard. मैं कैसे कर लेता हूँ? ओके, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि मुझे यहाँ पे console.log यूज़ करना था, बट मैंने यूज़ कर लिया अलर्ट। एंड सिंस मैंने उसको रेंडर पे डाला था तो वो अलर्ट हमेशा आता रहेगा, और यहाँ पे क्यों है? इट्स नॉट चेंज दिया, मैंने चेंज नहीं किया इसके। Oh, this is something else. This is something else, and let's go to repositories and what this one slightly modified today. Okay, and early this month. See if it can get to the right one to us. Hopefully, this side or okay, cool. Back to business. Sorry for the hiccup. ऐसी चीजें आती रहती हैं when you're not, when you're going for live coding and not prepared for it, and you want it to be a right experience. Okay. Now, right. So we needed floor buttons which I've created here. So let's quickly create it. We don't need to go back there and explain how to create it and how or why they create it. चाहते हैं यहाँ पे चलते से एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कॉल बटन्स, एंड जल्दी से उसमें एक फाइल, दो फाइल्स बनाते हैं. ओके, उसमें न्यू फाइल एंड न्यू फाइल कॉल्ड buttons.jsx, एंड एक और फाइल क्रिएट करते हैं styles.css. अभी स्टाइल्स ही नहीं तो हम जाते हैं बटन्स में ही करते हैं constant buttons is equal to yes है बटन करते हैं हमारे बटन, इसमें का बटन स्लैश बटन. अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे जो पिछले हमने गलती थी वो हम नहीं करेंगे. यहाँ पे कांस्टेंट ऑन क्लिक मेथड बताएंगे. तो टिल इट्स नॉट सो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि यहाँ पे ओके मैं बताऊंगा लास्ट टाइम हमने क्या गलती कर दी थी और उसको हमने कैसे सुधारा. एंड यहाँ पे हम लॉग भी डालेंगे. So alert is a blocking statement, will block your UI. We are not using alert this time. We'll be using log because it won't block UI, and you can still see the output. We'll say clicked. But हमें click तो नहीं चाहिए, हमें कौन सा props click हो, चलते हैं props dot label, and props will pass from here. ये फायदा होता है anonymous function का, right? So this is the arrow operated function, and this props will be accessible here because this props is a block level variable now, and it will be available in this block. So मैं किसी भी block में इसको add करूँगा, value pass करूँगा, तो basically this whole component will become a closure for it. And then when I use the buttons dot like when I use this button component and उस पर जब on click call होगा तो it will retain the value of label which is passed initially. ठीक है, तो ये हमारा एक थोड़ा क्लोजर कॉन्सेप्ट भी हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर करते जा रहे हैं. क्लोजर इज अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग इफ यू आर स्टार्टिंग JS. मुझे ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं बनाना, बट फिर भी अगर आप जावास्क्रिप्ट की बातें कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट आप सीख रहे हैं तो एक स्टार्टिंग में एटलीस्ट हर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा भैया क्लोजर क्या है. दिस इज क्लोजर. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है JS इंटरव्यूज में, प्रॉब्ली like कि implement the logic of apply or call. So call and apply is a concept in JavaScript where you can change the scope of the execution method. So तुम एक X method है उसको तुम different scope पे call करना चाहते हो, instantly you can do it. वो कैसे काम करता है till you not written the logic of call and apply, तो आपको पता होगा एटलीस्ट कैसे काम करता है. मे बी यू नो इट लाइक हाउ डज इट वर्क एंड यू नेवर ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, बट वंस यू इम्प्लीमेंट इट यू विल know in and out of it. And it can be a very good question to check the knowledge of JavaScript of people. Well,
At least I think I'm giving a tip to you. मतलब be curious about कि जो भी आप लिख रहे हो कैसे काम करता है. Like if you're writing console.log, how this log gets written in your tab or console tab in your dev tools, वो भी एक अच्छी चीज़ है समझने के लिए. So हमने डिस्कस किया है guys. We'll make it a learning Wednesday, and it's not about if you're learning a big thing. It can be a very small thing, but at the end of the day, you should be going out with some satisfaction कि यार आज मैंने कुछ नया सीखा. वो राहुल गांधी ने कहा था ना कि बस ये मजा मजा आना चाहिए. वही मजा हम भी देंगे. इससे कंपेयर कर रहा हूँ यार. Fine, so we have our buttons ready, and now without wasting any time, just import our buttons here. Or button. X ऊपर, and then we go to buttons and slash button. So, मैं इसको index.jsx पे देखता था. लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि index.jsx देने का फ़ायदा क्या होता है, बट मुझे लग रहा था कि मे बी आई एम गोना ऐड फ्यू मोर components here, but I might not. That's why I named it buttons.jsx. But if it's a single level component, उसमें कोई उसके सिबलिंग भाई बहन नहीं बन रहे हैं, तो components नहीं है, और मल्टीपल components आप ऐड नहीं कर रहे हैं, तो it's good to just give a index.jsx. इसको मैं क्लोज करते हैं फटाक से, एंड यहाँ पे मैं एक लेबल पास करना पड़ेगा बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग देयर. पास लेबल called as up, and powerful चाहिए. Now we are not keeping our elevator here. ठीक है, तो elevator हमें चाहिए तो सही, ठीक है, and when we'll be designing, we'll make it look like that elevator inside the floor. But in code में elevator उसके अंदर नहीं रहेगा, because I mean we can keep it inside each floor, and then we can write a controller logic to move it up and down. But जो फिर animation आएगा ना, मज़ा नहीं आएगा. एक जगह से हट के दूसरे component jump करेगा. It will be jumping animation, and we want a smoother animation. So probably we'll be doing some calculation to figure out the floor height and width, and when the lift moves to one floor to another floor, we'll be changing the uh, coordinates, or basically the top and bottom values of the lift to move up and down. But logically to be said, uh, now every floor should have a button. Do we have some comments? Let's say. Clear possible. बस क्लियर करके फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या हुआ. This warning and there's warning and there's nobody is using. Okay. तो ये इसलिए फेल हुआ कि हमने यहाँ पास्कल यूज़ किया था. और when you are passing a JSX component or rendering JSX component, make sure it have a capital, starting with capital alphabet. And yeah, see, we have two buttons up and down, guys. Now we can go up and we have down. And अगर आप देखेंगे तो नीचे मैसेज भी आ रहा है, console.log भी आ रहा है कि कौन से बटन क्लिक हुए. तो we are halfway through. ठीक है. Now we have up and down options. Now we have our numbers, and we have our buttons to make the elevator go to different floors or open and close, right? But हमारे पास एक बहुत ही major thing missing है अभी, that is our elevator. Now if you go back here, यहाँ पे हम देखोगे हमने export तो हम buttons कर रहे हैं, but import floor button कर रहे हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ये चीज़ last lecture में वाला, not lecture guys, या lecture कौन लेगा, लास्ट सेशन में डिस्कस की थी कि
Uh, if you are doing a default import, you can rename it while import like default export. You can import it as any name you want. But if you are doing simple export, then you have to use the exact name because then it will export as a object key. So you need the key to import it, right? And since we are importing as default, it will go into a whole object which we can rename it and use it. So basically, it's a component which we can rename it. Okay, तो import export थोड़ा बहुत क्लियर हो गया. हमारे बटन्स आ गए, हमारा फ्लोर आ गया, हमारे डायलर्स आ गए. ठीक है, नाउ वी नीड अ मेजर थिंग विच इज आवर एलिवेटर. सो लेट्स गो एंड क्रिएट आवर एलिवेटर. वी कॉल इट लिफ्ट. क्विकली विल डू इट. छोटा सा बॉक्स बनाना है बस. ये, नहीं भाई हमें नहीं चाहिए. और लिफ्ट में एक पास अगर हम जाएंगे तो वी कैन क्रिएट अ index.jsx फाइल. y index I already mentioned, रिपीट नहीं करने वाला. एंड styles.css. आज मैं थोड़ा मज़ा भी आ रहा है करने क्योंकि मैं 3 दिन से किसी और काम में स्टक हूँ और मैं मूवी नहीं कर पा रहा हूँ. बहुत ही दिमाग खराब हो रहा है. Tried multiple ways to do it. पता नहीं क्या इशू है. I mean, when it's a device related issue ना तो बड़ा दिमाग खराब होता है कि it's compatibility issue और feature is supported in one device and another support कर नहीं रहा है, and even the developers of that device is not working on it or not even viewing that ticket or not taking it seriously, but it's a customer requirement. And then you're banging your head against your table कि मैं से क्या करूँ. खुद का डिवाइस खुद का ब्राउजर बना दूँ क्या. So now we need a lift, right? So हमें क्या लिफ्ट करना है. एक लिफ्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसको असाइन करना है, एंड उसमें एक रिटर्न मारना है, एंड उसका JSX डिफाइन करना है. बिकॉज अभी तो हम केवल UI बना रहे हैं, लॉजिक तो हमने ऐड किया नहीं है. तो लेट्स डू इट. कैसे करेंगे. थोड़े कॉम्पोनेंट ऐड कर देंगे. एंड तो ओके, एक क्वेश्चन था जो हमने यहाँ मिस कर दिया. लेट्स गो बैक टू आवर एलिवेटर, नो फ्लोर. ओह, एलिवेटर ओनली ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था. और यू मे आस्क कि हर जगह पे जहाँ पे हमने कंपोनेंट्स डिफाइन किए थे वहाँ पे हमने एक स्टाइल्स डिफाइन भी की थी कि इसका लेआउट कैसा हो, कैसे हमें इसको आइटम्स को रेंडर करना है, कि अप एंड डाउन, साइड बाय साइड, इन अ रो, इन अ कॉलम, सब हमने डिफाइन किया था. इफ यू गो बैक टू दिस फ्लाई साइड एंड द अदर कि नॉट हियर, गो टू बिल्डिंग, you see we defined a grid layout. Then we said कि grid layout में एक ही column होगा. This is one of our. But in case of floor, if you go back, we have defined floor button inside a div, but we have not defined the layout. But we are getting the way it's supposed to render, right? The up should be on top and the down should be below. So what happens in case of div? Div is a block level element and it takes a full space. Okay. So when you're using a block level element, uh, okay, so div is a block level element and button is also a block level element. So the floor button is basically returns where's the button? It's written a button element, right? So button is a block level element, so it will take 100% width, and which will come here and it will take the full width. By default, the next item will go down. Similarly, this is again a floor button, so it will take full width. So अगर इसके बाद भी कुछ item लिखता हूँ, right? It will also go down to it. So for example, I'll create a span. Okay? Then I'll say test. And it was save. So if you see here, like because the color is not there, you see in the check the color, like एक काम करता हूँ. When you say color, now you can ask like यार यहाँ पे आपने span लिखा है, यहाँ पे dot लिखा है, यहाँ पे dot क्यों नहीं है? So dot represent the class name, and without dot you represent the tag name. Our tag we are using here is a span. So we can directly give a tag name here and start writing our properties of CSS.
सिंपल। हमने यहाँ पे कलर वाइट दिया, सबका कलर वाइट हो गया। ऐसा बस दैट, मतलब कुछ मेजर चीज़ नहीं है। नाउ इफ यू नोटिस्ड, right, our test is coming next to the down because it's a span element. Now if I do this, where do you think the span will come? Array auto refresh. Okay, so basically it will come down because div is a block level element, and now if I write multiple span element next to it, because these are inline block element because they take some space but inline inside a block, uh, and sorry, inline element, and you can say test one and say test two. They're coming next to each other. ठीक है। अब अगर इसके बाद भी मैं एक और देता हूँ जिसमें विड्थ हो गई है, तो ये ओवरलैप करने का जाता है उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है कि हाउ टू हैंडल दिस ओवरलैपिंग एंड ऑल। विल लुक इट इन फ्यूचर, अभी तो हमारा रिक्वायरमेंट है नहीं, एंड हमें डेविएट भी नहीं होना है और हमें टाइम फिनिश भी करना है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने बीच में डेविएट होकर देख लिया, बट ये मुझे डेविएट होना छोड़ना है। ओके, सो वी हैव अप एंड डाउन बटन, वी हैव floor, we have a apartment, and we have now elevator. And now elevators में basically क्या होगा कि इफ यू सो हम अभी हर सब कुछ फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, राइट? आपने अगर ईडी पढ़ा हुआ है, इफ यू इंजीनियर, और लाइक आपने आर्किटेक्चर पढ़ा हो गया, अगर आप हो गए, और आपने नहीं भी पढ़ा होगा, तो समझो या कोई चीज़ फ्रंट से देखो कैसे दिखेगा, ठीक है ना? बस वही सोचना है। अगर हम फ्रंट से कोई चीज़ देखते हैं, फ्रंट से अगर हम एक एलिवेटर देखते हैं, लिफ्ट देखते हैं, तो क्या लगता है? दो गेट रहेंगे विच विल ओपन अप एंड शट डाउन, नथिंग एल्स, राइट? जब ओपन करेगा तो अंदर एक स्पेस दिखती है जो जहाँ पे लोग खड़े भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, and बंद होता है तो किल गेट दिखता है। तो हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि वी आर डूइंग अ 2D पार्ट, सो विल वोंट बी गोइंग टू अ 3D पार्ट। वी कैन गिव अ बैकग्राउंड इमेज, तो जब ये ओपन होगा तो गेट गिव अ डिफरेंट कलर टू द गेट एंड डिफरेंट कलर टू द बैकग्राउंड। So when we'll be opening the gate, we'll see a color behind. We can do that way also, and let's do that way. It will be more visually uh, nice. I need to increase my vocab so I can come with like some brilliant terms जो सुनने में मजा आ जाए. Okay, so we need div. We can do it with span, but I'm using the div because पता नहीं बहुत मजा आता है div use करने. एक div यहाँ use किया, एक div यहाँ use किया. तो ये हमारा div हो जाएगी लेफ्ट गेट, लेफ्ट का गेट का लेफ्ट साइड, एंड दिस div will be the right side of the gate, right? Okay, let's give a class name here, and a class name is equal to gate. Since both of the class names should be, I'm giving, okay, so you can give multiple class names here. Like मैंने यहाँ पे gate दिया, यहाँ पे gate दिया, ठीक है? Now I can do a left here and right here. So हम क्या कह रहे हैं कि अब इस particular element पे it can pick properties from two classes, right? Now which so in case एक एलिमेंट पे मल्टीपल क्लासेस अप्लाई करती हैं, तो एक इशू ये आता है कि which property to pick in case of overriding, right? No, from overriding, if mean कि suppose for this element there's like 10 or 20 class names are applied, and some of the classes are sharing common property, like एक में लिखा है width 10 pixel, एक में लिखा है width 12 pixel, एक में लिखा है width 14 pixel. So how the browser will decide कि किस property को pick करना है, right? क्योंकि मेरे पास 10 options है, 10 में से एक चूज करना है। अब यहाँ तो सिलेक्शन का टाइम आ गया, तो उस टाइम फिर ब्राउज़र इंजन को सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से प्रॉपर्टी को पिक करना है, और उसके लिए फिर जो स्पेसिफिसिटी रूल आता है, करेक्टिंग इट लाइक spelling it correctly, it's called specificity. And how does it work? I'll give an example. For example, we have defined a dot gate, and we have defined a dot left, and let's move it door over the right.
So suppose we are applying three classes here. मगर पहले तो मेरा जीना है क्या करना है क्या हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं ना भी तो मजा आएगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिमिटर तो तुम लोग बोलोगे कि यार हर चीज़ को आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो कुछ कंपोनेंट लाइक मल्टीपल एक्सपोर्ट करके भी दिखाओ देखो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है वी आर क्रिएटिंग अ स्मॉलर सिंगुलर कंपोनेंट्स एंड वी आर क्रिएटिंग कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर जहाँ पे छोटे छोटे रीयूजेबल कंपोनेंट हमारी कोशिश कर अगर हमारा कोड थोड़ा बड़ा होता है जब हम ज़रूरत होती है कि हम मल्टीपल जैसे सपोज we are doing a TypeScript and we want to keep the props as a part of one file only. You can create a separate props file, but if you mode में नहीं है मुझे same file में props रखनी then you can export props as well and the component as well because there's a might there because when you'll be using that component in some other file, you need to use that props also in some cases. क्यों करने पड़ेंगे जब हम TypeScript पे जाएंगे तो हम वो बात चीज़ डिस्कस करेंगे अभी समझो कि सिंपल कंपोनेंट है बहुत ही सिंपल चीज़ बनाई है अभी बेसिक से चालू कर एकदम कुछ नहीं आता हमें मान लिया हमने और धीरे धीरे से सीखते जाएंगे ठीक है तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे एंड अभी ये रहा हमारा सिंपल कंपोनेंट एक्सपोर्ट तो हम डिस्कस कर रहे थे रूल ऑफ स्पेसिफिसिटी ठीक है तो स्पेसिफिसिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ठीक है मैं तो यहाँ पे तुम्हें क्लास का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे you can override inline classes and then by class names and then there's the selectors type also defined कि आप selector wise भी define करते हो कि किसको को पिक करना है किसको नहीं पिक करना है सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होता है इनलाइन सीएसएस नहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट ही होता है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट बताऊंगा तुम्हें लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइक जो ओवरराइड करता है बाकी सारी स्टाइल्स को इट्स इनलाइन स्टाइल्स इनलाइंस क्या होता है कि मैं यहाँ जाके एक स्टाइल्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ और बोलूँ स्टाइल्स इज इक्वल टू डाटा यहाँ पे स्टाइल्स ऑब्जेक्ट डाल दो कि वैल्यू ये वैल्यू दिस वैल्यू दैट नाउ दिस विल हैव द मोस्ट पावर लाइक अगर किसी भी फाइल में आके मैंने यहाँ पे लिख दिया तो जो भी रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे दीज प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट अ रूल कि यार अगर ये मैच करता है तो ये चीज़ अप्लाई कर दो ठीक है तो वो उस रूल को ओवरराइड करके अपनी प्रॉपर्टी चिपका देगा इन केस basically it's not a good habit to go with inline styles because override करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है एंड रियूजेबिलिटी के इश्यूज आते हैं तो इट्स बेटर इफ यू कैन डू इट क्लास वाइज राइट तो क्लास वाइज इजी होता है मल्टीपल इफ यू वर्किंग अ बिग प्रोजेक्ट और यू वांट टू मेक अ reusable components and it's good to go via class wise now how to do it via class it's very simple uh, basically now we have created three classes here right and each class will have a value like suppose color not color will be giving border which will have border 1 pixel solid white and this will have border 1 px solid light green and this will be having border 3 pixels solid red 2 pixels. But how do we test it because you have imported it exported it but we have not imported it sorry तो हम जाएंगे फ्लोर पे और बोलेंगे बेसिकली वी डोंट नीड अ फ्लोर वी नीड मतलब एक आप जब एलिवेटर लगाते हो तो आप एक फ्लोर पे लगाते नहीं हो ठीक है ना हर एक फ्लोर पे रुकती है बट आप एक फ्लोर पे एलिवेटर नहीं लगाते एलिवेटर लगती है पूरी बिल्डिंग में ठीक है तो हमारी भी एलिवेटर को अगर आप डिज़ाइन बेसिस पे देखो ठीक है अगर आप कुछ भी आप लाइक कोड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में आता है ना इट्स ऑलवेज गुड आइडिया टू मेक इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल एक रियल कॉन्सेप्ट देख के उसको बेसिस पे आप इम्प्लीमेंटेशन चालू करो when Google is coming with their material design which is like very famous at one point of time और अभी भी काफ़ी famous है so they actually clicked different particles and different elements and real elements कि silk का shadow कैसे आता है different position में and उसके basis पे और या फिर wood का कैसे आता है उसके basis पे they have defined the standards for their material design
तो दे एक्चुअली टेस्टेड ऑन डिफरेंट मटेरियल, उस पे उन्होंने फिजिकली उस पे टेस्ट किया, उसके एक्सपेरिमेंट किए और उसके बेसिस पे उन्होंने वो मटेरियल डिज़ाइन बनाए। तो हम भी यहाँ पे एक फिजिकल एप्लीकेशन का, लाइक फिजिकल एलिवेटर को सोच के डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। तो जब एलिवेटर कहाँ पे आता है, बिल्डिंग के अंदर आता है, तो हमें भी इसको बिल्डिंग के अंदर मूव करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फ्लोर, राइट। तो यहाँ पे जाके हम एलिवेटर को इंपोर्ट कर लेंगे चुपके से, अ, चुपके से। ये कहाँ पे हमारा एलिवेटर, एक ही ऊपर है, तो इट्स दिस इज advantage of creating a hierarchy in the same level. Now I can like find easily my components. अगर अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम करो तब तो इशू आएगा, that आपको सब नेस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेंगी मल्टीपल लेवल पे to handle it, and then your import will look very weird, dot dot slash dot dot slash dot dot slash dot slash. बट हम एक सिंपल चीज़ बना रहे हैं तो अपना डिज़ाइन भी सिंपल रखेंगे, और सिंपल चीज़ें जैसे हमने देखा है कि मज़ा आता करने में, इजीली चीज़ें हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। Okay, so we have a building and we have an elevator, and now where the elevator goes, it will go inside building container. Okay, you have map my flows, and next to map my flows, you can have good. Okay, so it's coming down here because it's के नीचे आ रही है. That's fine. That's totally fine. हम अभी इसमें styling करेंगे. We need to do one more thing here just to make sure. Now, uh, I missed one thing here. Doesn't it need some width, guys? Okay. So okay, now the thing is, why there's two building containers? We are okay, good. It's all good. Right. So if you see, okay, अभी currently क्या issue अभी आ रहा है हमारा कि एक red आ रहा है, एक white आ रहा है, ठीक है, which is a gate left, which is a gate right. Now why one is coming left, red and thicker? If you see the border is a little thicker and the this border is a little thinner. Yeah. So this is because of this particular class. क्लास स्पेसिफिसिटी कैसे वर्क करती है कि जो लास्ट में जो क्लास रहेगी वो अपने ऊपर जितने भी क्लासेस हैं उनको ओवरराइड कर देगी, तो इसका लेवल ऑफ डिक्लेरेशन मैटर्स। नाउ इफ आई मूव गेट फ्रॉम हियर टू हियर, स्टिल कमिंग ऑन राइट, बस इसका ने इस वैल्यू को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। So this is how it works, as simple as that. Now what kind of color we want is, the border, let's keep it white only, and we don't need order in left and right. Yes, so well. Yeah. So uh, why we need class, right? Because we can already also give our inline CSS and inline styles. So why we need class? तो class से क्या होता है कि आप एक तो कोड आपका थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। I mean, if there's multiple elements which are sharing same properties, then you don't have to define again and again. You can just define a class and you can use that class in multiple places. Water break. जब तो मजा आ रहा है कि नहीं, थोड़ा कमेंट किया जाए। What do you guys? Friends which are sharing, then you don't have to define. Okay. Again. ठीक है. Hey guys.
ओके चिंता, सो हम ओपन क्लोज पे पहुंच गए, हम 1 2 3 पे पहुंच गए और हम बात कर रहे थे क्लासेस की। तो हमने क्लासेस समझ ली, क्लासेस की जरूरत क्यों है और हम क्यों लिखते हैं, एंड व्हाट इज एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है। नाउ अभी हमें पास एक इशू अभी भी है, राइट, कि हमने एलिवेटर बना तो दी है, तो यहाँ पे दो इश्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिवेटर जमीन के नीचे क्या कर रही है? इट शुड बी ऑन द फ्लोर्स, राइट? So everybody on the floor. So and second of thing is the gates like up and down, but we know need a parallel gates like side by side. Correct. Now uh, we can do it via grid, but I'm going to implement it via flex. How does flex work? We'll define a class name here. Class name is equal to flex row. And now what is flex row will work? How it's work? We'll come here and we'll say dot flex row, and we say row. We need a display flex. Okay. And then we'll define the flex direction. So flex direction will define how your components will render. So we want is in the horizontal, right? One next to each other. बोलेंगे हमें display चाहिए row. And justify content is basically apply to the row layout how the components should be rendered in row. So in justify content we'll say मुझे क्या चाहिए, space around चाहिए, between नहीं चाहिए. Now the thing is our gate component have height, it have border, but it doesn't have width. That's why it's looking weird. And we have a floor width of how much? 80 pixels. So we need a 40 pixel width of gate, because or 30 pixel, because it's not exact same to the width of your floor. Let's keep it 30 pixel of it. Uh, ठीक है, हमने 30 पिक्सल की वेट बताई, और हाइट विल बी सेम एज द almost close to the height of the floor. And what is the height of floor here? We have around 100 pixels, so we've 30 pixels too low. We'll make it around 60 pixels. Cool. Now it looks decent. Actually, we can make it up to 70 pixels. Yeah. The problem here is since 30 pixels fine, 70 pixels fine, but there's a lot of gap between them because it's seeking the full width. Probably we can just have to do is कि यहाँ पे जो parent backup को एक width define करनी पड़ेगी. We'll give a width of 60 pixel, but we'll change it, and I'll tell you why and tell you how. Now uh, we'll create a dot open, and here the width will be around 80 pixel, and we'll change this to space between. अगर समझ में नहीं आया, simple concept अभी समझाता हूँ. So look at here, like look at that this white blocks. Yeah, these two are together right now, like a closed door. एंड वी वांट कि जब भी एक पर्टिकुलर फ्लोर पे ये गेट पहुंचे तो इसको ओपन होना चाहिए, ठीक है, जैसे एलिवेटर काम करता है फॉर अ सम स्पैन ऑफ टाइम. वो कंट्रोलर हम बाद में करेंगे. फर्स्ट लुक इन द ओपन एंड क्लोज लॉजिक. So it should get open, people should enter it, and then it should get close again. उसके बाद एक और केस आता है कि अगर जब क्लोज हो रहा हो तो बीच में कोई बाधा आ जाए. बाधा क्या होते हैं? some kind of distortion between if someone put a hand or someone put a leg, कोई बीच में खड़ा हो जाए शाहरुख खान का पोज देते हुए, तो उसको वापस टकरा के वापस खुलना है, राइट? ओपन इट अगेन. Basically we are trying to write a open and close logic here. Now what I have to do is in case of open you just need to add a class name open. Okay. You see there's a space between them. ठीक है. और हम एक और काम करेंगे यहाँ पे. This open will not just apply here. This open will apply here also and here also, and we don't need this override class.
Actually, we don't need this open here itself because I'll tell you why. We'll use a selectors here. इसी बारे में selector भी समझ जाएंगे सीख जाएंगे ठीक है. So dot open represents the class name. Now this selector represents the child items. तो हम क्या चाहते हैं कि every div element inside child element dot open class should have a width of 10 px. Wow. So this is now 10 pixel, which is the open part. And if I just remove the open class, and this is closed elevator, right? But ऐसा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एलिवेटर सेंटर लाइन नहीं तो मज़ा नहीं आ देखने में ठीक है. तो ये काम तो पेरेंट ही करेगा. पेरेंट कहाँ पे है? यहाँ पे है. तो बिल्डिंग कंटेनर में आते हैं. बिल्डिंग कंटेनर यहाँ पे and display and so I'm not used much grids. Let's see how to center child grid layout. I know how to do inflex, but I want to learn the CSS grid and we'll see it. Oh, okay. So this is the same concept as flex. We'll just say justify content and we say center. Uh, oh, but it's the issue that so ये हमें change elevator में करना पड़ेगा because defining this justify content space between and तो यहाँ पे हम कर देंगे क्या. यहाँ पे हम कर देंगे सेंटर और यहाँ पे हम कर देंगे space between. Uh, cool. एक बार हम ओपन टेस्ट कर लेते हैं अपना. ये स्पेस अराउंड क्यों लग रहा है. दिस इज स्पेस बिटवीन should be space between like extraction of center with this 80 and so basically it should go. I mean, it's a semi-console. No, no, no. Weird. Oh, मैं जो गलतियां करता हूँ ना उस पर इतनी मिनी क्लिप्स बन जाएंगी ना कि आप बस हंसते रह जाओगे. जस्टिफाई कंटेंट कहाँ लाएगा. पेरेंट लाएगा और मैं लगा कर मेरा चाइल्ड लगाऊं. कैसे काम करेगा. Worked. I'll just remove this thing. Okay, so छोटी सी गलती दोस्तों ऐसी मतलब ये ऐसे फिक्स हो जाती है. आधी कोडिंग तो आपकी गलतियों से ही टाइम हो जाती है. ओके सो अब हमारे पास देखिए सारे मेन कंपोनेंट्स हैं. हमारे पास अप डाउन बटन है. हमारे पास एलिवेटर है. हमारे पास एक डायलर है और बट काफ़ी चीज़ें लाइन नहीं है. ठीक है. नाउ दिस elevator is supposed to be in a play inside this and
उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एलिवेटर को बोलेंगे पॉज, बोस, ठीक है, दैट, लेट्स गिव वन मोर क्लास हियर, 11, कि तुम कंपोनेंट तो रेंडर हो गए हो बट यू आर नॉट सपोज टू रेंडर इट हियर, दैट क्लास वेयर आई शुड रेंडर, तो तुम्हारी पोजीशन जो है ना वो तो है एब्सोल्यूट। सो when I say absolute, इसकी पोजीशन आएगी अब इसके पेरेंट कंटेनर पर डिपेंडेंट होएगी, इसका पेरेंट जहाँ रिलेटिव चालू होता है वहाँ से इसकी कंडीशन एब्सोल्यूट है। तो अगर हम इसमें कहता हूँ टॉप 0, अब इसको पहुँचना चाहिए ऊपर, ठीक है, ये पहुँच गया ऊपर, बट हमें तो चाहिए इसके अंदर, सो आइडली इट सपोज टू बी इनसाइड। ओके, बिल्डिंग में हमने मैप में फ्लो किया, बिल्डिंग कंटेनर दिया, बिल्डिंग कंटेनर ये है, ये डायलर कहाँ एंटर हो गया मेरा, ओके सो so this thing also should move there actually, तो हम एलिवेटर को ऐसे हटाते हैं, एलिवेटर को बोलते हैं बस ये इसके पैरेलल में, एलिवेटर को हम यहाँ अंदर करेंगे, चलेगा, एलिवेटर चलेगा, इस बार मैं गलती नहीं करूँगा, ठीक है, अल्लाह मिनी क्लब बन जाती है यहाँ पर। तो डॉट स्लैश स्लैश कंपोनेंट्स एलिवेटर, ये सिंगल डॉट है, डबल डॉट कर रहा हूँ, फाइन, सो हमारा एलिवेटर के टॉप पे ऊपर है, ठीक है, नाउ इट इज सपोज टू कम इनिशियली मे बी एट 0th फ्लोर और फ्लोर। तो यहाँ पे काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व है कि हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है, हमने यहाँ पे भी मार्जिन और पैडिंग डिफाइन की, दैट्स व्हाई इट्स जस्ट कमिंग इन रूट ऑफ इट, राइट। तो हमें इसको टॉप पोजीशन कैलकुलेटर डालनी पड़ेगी, तो कैलकुलेटर कितनी होगी, अराउंड ये 50 पिक्सल हमने यहाँ दिए, 20 पिक्सल लेना, तो आई थिंक 80 पिक्सल शुड बी इनफ for top floor, which will be, see, 80 minutes almost there, and if we make it to 100, it should be down in between somewhere. Still connect करेगा भाई, एक बार से करेक्ट मिल जाता है ना, ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे मिल गया 180, एंड इसको थोड़ा हाइट और देते हैं दोस्तों, थोड़ा अच्छा लगेगा हाइट में, एलिवेटर की हाइट हम देते हैं अराउंड, हमने हाइट इसकी दी थी 100, इसकी लेफ्ट की फिट 80, ठीक है, और यहाँ पे हमें थोड़े चेंज करने पड़ेंगे कि टॉप वैल्यू हमें करनी पड़ेगी 160, अब सही रहेगा, इसको ओपन करके देखते हैं कैसा लग रहा है, वाह, वाह, ओके, सो नहीं, यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी है कि अभी अब जो अप डाउन है ना, दे आर लुकिंग वेरी वियर्ड, दे आर लुकिंग रियली वियर्ड, एंड दे डिस्टर्बिंग द होल थिंग, तो हमें भी यहाँ एक चेंज करते हैं, इसको अप डाउन को हम कर देते हैं थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा सा सीएसएस डाल देते हैं उसमें, ठीक है, तो जाते हैं काम बटन्स में, कहाँ है बटन्स, डाउन हियर, कोडिंग टाइम कैसे पता चलता है उसका, यहाँ पे आते हैं क्लास कर देते हैं फ्लूइड, बट फ्लूइड, ओ बटन ही गायब कर दिया मैंने, वेरी गुड, तो हमने अब एक फ्लूइड बटन दिया, लेट्स गिव इट फ्लूइड बटन एंड लेट्स
Now, basically, let's do one thing. Let's divide this fluid pattern into two parts, top and bottom, and इसकी हम visibility गायब रखेंगे just to give a better flow. और we'll give a very low opacity and जब hover करेंगे तब opacity बढ़ा देंगे. Opacity क्या होता है? It's basically opacity defines the translucency of element. अगर हम opacity zero करते हैं, it become a transparent element. You can see आर पार. और अगर हम उसकी opacity थोड़ी middle करते हैं तो it will be translucent where you can see behind what's happening, but you can see the actual element also. तो यहाँ पे हमें केवल प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे ये भी समझ रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनका रियल वर्ल्ड से कैसे रिलेशन है. तो अगर हम we'll feel more connected actually. All the programming languages is more humanly or object or your real life things are more connected to them, but हम बस relate नहीं कर पाते हैं. And जब हम relate करने लग जाते हैं तो हमें और समझ में आने लगता है. Took me some years to understand this concept, but ठीक है. slowly slowly मतलब कौन सा कल ही गूगल क्रैक करना है. So basically let's give a height. Let's give a height of that was a total of 100 pixel. Let's give a height of 50 pixel. Let's give a width of 40 pixel. It will just fit to our container, and then we'll give a background color. Gradient देते हैं कोई बढ़िया सा कुछ एकदम शानदार सा था. एंटीक वाइट देते हैं. उसका ऑप्शन नहीं गया. ओके. एंटीक वाइट हमने कलर दिया. सब कुछ है. एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक नाउ. इट इज. भाई यू नो चेंज. सही वाइट सही. Okay, so guys, this is why it's not working because import का ही नहीं है. So till I don't import a style class here, any properties which are defining in this styles won't be applicable to the component. So that is why it's very important to define it. Views नहीं है यार. Someday 10-20 लोग एक साथ देखेंगे, मजा आएगा. Okay, so as you can see now buttons are looking a little different. They have a height. They have width. So width will be not 50 pixel, width will be 80 pixel because our length is 80 pixel. हो जाओ. These guy. Wow. So this is looking better. Now we discussed this before कि हम यहाँ पे opacity बहुत कम कर देंगे. Let's keep opacity to point is 1. ठीक है. अभी आपको समझ में नहीं आ गया यहाँ पे है कि नहीं है. ठीक है. तो उसका सोल्यूशन है हमारे पास कि जब हम होवर करेंगे, right, we'll say on hover as well as not comma actually space. Active. In this case, we'll give a opacity of 0.7. Let's see how does it represent. Okay. The next ratio, yeah.
Okay, so what happening here is कि जो मेरा elevator है, it's taking the space over there to which is kind of okayish for me for right now because if I'm in the same row, same but नहीं वो चाहिए तो just elevator close हुई है और सामने कोई खड़ा है and they press up and down and should open it up. Okay, so probably creating fix this now. Okay. Mm-hmm. Okay. Let's see about this. So what's happening is कि जो हमारा elevator component it's coming on top of my button components. And that's why it's I'm not able to click over my button component here. It's fine. We'll fix it. But अभी हमें यहाँ पे एक options आ चुके हैं different buttons के. It's look like more visually aligned and active. अब हमें क्या करना है कि एक और चीज़ में एक्स्ट्रा करना है कि अगर फ्लूइड बटन में डॉट एक्टिव तो भी हमें ओपेसिटी 1 रखनी है। नाउ स्पेस व्हाट इससे कि both of this property should be present in the class then only it will apply, right? तो मैं यहाँ बटन में आता हूँ और मैं कह देता हूँ यहाँ पे like the space is not required over there. मैं space दे देता हूँ and okay. So now if I remove active should go down, ठीक है। The moment you have I need active that will okay, that's cool. Uh, we are close to our logical part now. We can start writing logic in 5 or 10 minutes, maybe. Yeah, and move it to 180, and this also should be fine then. Oh, yep. Move. So now, what we will be doing is this important part will come up like whenever we are going up and down, we will be changing the top position. This is the hacky way we will be doing here of the elevator. And we'll be calculating the elevator top and bottom position. So top position we know it's 226 pixel. We can define a offset constant that the top is 220 pixel. Now we'll be defining and when we'll be moving up and down, then we'll be just changing the calculation like top value. If it's going down, then we'll be adding another 100 pixel. Like if I make it 320, right? One floor down. If I'll make it another 420, it will be another floor down. देख रहे हैं आप समझ रहे हैं और हमें एक और चीज करनी है कि when I click on this thing up and down it should be activated uh, till the elevator doesn't reach there and it don't get open up एक बार open हो जाता है and तब वो बटन like एक बार elevator वहाँ पहुंच जाता है तब उसको ऑफ होना है and elevator should open it immediately after that ठीक है so now going to our building component and in this building but we have this was it here right
In app we have everything. So we'll create a use state. So basically first हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे import star as react from. हमने react क्यों किया कि हमें use state यूज करना है, तो केवल use state import क्यों नहीं किया? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है केवल use state करने में. uh, Alphabetically star should move in top and the star this thing should go down. If you'll be using ESLint and like prettier prettify for your formatter, this will be done by your editor. But since we're not, I mean, I think even Code Sandbox provide the option to add those things. But let's not go and setup part. Probably I'll come next time with all the setups. Guys, कुछ बताइए कैसा लग रहा है आपको? How do you like it? थोड़ा बहुत recommend. Okay. So basically, how does a use state works? Basically, it works. Okay. So use state is a driving factor in React, one of the driving factors. So how does React virtual DOM compiles, right? It's one way is you can use a set state, and whenever that state change, so it uh, changing the start trending down the its component child components, and if the value is changing, so the components will start rendering. Now, depending upon which depth, like, so if you have a very huge application, you can have multiple set state for multiple components. And if parent state doesn't change, so it will just change that block which is changing. Like if there's okay, for example, my building elevator and dialer is here, right? Every one having one state. Okay. Suppose अगर केवल elevator का state change होता है, तो elevator component will render, building and dialer will still be the same. एंड बट अगर इन केस कि मैं ऐप को चेंज करता हूँ, दिस कंपोनेंट इज चेंजिंग, यहाँ पे भी एक स्टेट वैल्यू अटैच करता हूँ, उस वैल्यू को चेंज करता हूँ, दिस होल कंपोनेंट विल बी रीरेंडरिंग, राइट? So creating smaller modules and then creating smaller use state module or and creating a smaller storage class like I will say smaller states will be helpful because आप एक छोटे से चेंज के लिए पूरी एप्लीकेशन रेंडर नहीं करोगे. For small changes, you'll be just running a particular portion, dedicated portion to it. And when you're creating a bigger application where there's multiple state changes happening at once, then those state management library come in the picture like Redux and Mobex. So what we will do one day that we'll be creating an example application with both Redux and Mobex and also with just the use state. Like we'll be using state hooks also. एंड फिर उसके बाद हम उनका तीनों का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे तीनों में से कौन सी लाइब्रेरी बेटर है. इससे बेटर एग्जांपल क्या होता है कि चेक करने का कि कौन सी लाइब्रेरी बेटर है, लाइक व्हिच स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यू वांट टू गो फॉर. हमारा राइट में फटा पड़ा है कोड, परेशानी नहीं है उसमें, टेंशन नहीं है क्योंकि हमने कोड ही आधा लिखा है. ओके सो मैं लिखता हूँ एप्स लेफ्ट स्टेट एप स्टेट ही रहता है. एट ऐप एंड रिएक्ट डॉट वेट equal to what we can do is we can actually define init state and selected floor. Oh, okay, let's see, it's by default 0 and no, selected floor भी an array, right? So अब हम क्या use cases पे देख रहे हैं सारे, ठीक है. और पहला क्वेश्चन रहेगा कि हमें लिफ्ट पोजीशन, लिफ्ट अभी कहाँ पे, कौन से फ्लोर पे, तो लेट्स से by default 0. Now comes the selected floor part, right? आना बोल भाई. It will be an array. Will I ask why array? So
what we will be pushing here in this array will be the which all flows are selected. Suppose I clicked on 9, 8, 7, 6, 5, 4, and then I clicked on no. So suppose if the lift is at 0th floor, and I click on 9, 8, 7, 6, and I click on up in the 5th floor. Okay. So this component should have the information of all the floors it's supposed to stop. Correct? Okay. And in the moment it stopped in one floor, which is a part of this floor, this value need to be removed. Right? 987 9th floor में पहुंच गया हूँ. So that's not a selected floor anymore. That's the one thing to apply. By default, nothing is selected. Let's keep it empty. And next will be the direction. Direction initially will be if we are 0th floor, suppose चालू ही हो रही है initially है 0. So let's see. The direction is up. Why direction is important? Uh, it will define like which direction it need to go. Yeah. So suppose lift यहाँ से move की 0th floor से and it reach up to 5th floor. ठीक है. And already 9, 8, 7, 6 selected है. So and someone selected 3. In the 5th floor is not supposed to go up. It's supposed to go. No, it's not supposed to go down. It's supposed to go up only. It will go up and it will be removing only the up floors. So basically, whichever floor we remove, we'll remove that floor only. And then once it's reached to the maximum direction during or the top value, suppose the top value is 8 and no one pressed 9. So after like once we're reaching the top value, we'll be waiting for like few seconds, probably a 10-second, 20-second timer will run. And if no one presses any floor on top, then it will again change direction itself to down. Like if there's a down floor available, then go down. If this down floor is not available, then go nowhere. Stop there. So in that scenario, the direction will be nothing. So okay, it will have three values. So by default, we keep a null. तो अभी इसको पता नहीं इसका डायरेक्शन कौन सा है, ऊपर या नीचे कहाँ जाना है. हमारे पास डायरेक्शन नहीं है अभी. जैसे हमारी लाइफ चल रही है बिना किसी डायरेक्शन के, वैसे हमारा नल है, एलिवेटर है. सो वी हैव डिफाइंड दिस. और कुछ चाहिए हमें? We don't need anything here. We need a app state in lift which will define up and open and shut. Okay, I think this is good. We'll be updating our state depending upon. So my app state आ गया, was update app आ गए. What update app will do is, so this is a React code part. We can update the app. So suppose this is a building flows, right? And we can write on flow select as a method here, and we can say selected flow. ठीक है, and selected flow में क्या जाएगा? Selected flow में app state dot selected flow जाएंगे. Dot selected. एलिवेटर में selected flows जाएंगे. एलिवेटर selected floor जाएंगे. Obviously जाएंगे. क्यों जाएंगे? वही चीज़ डायलर में जाएगी. You can see कि यहाँ पे हमें red आ रहा है because we are defining something which is not available, and this is the props which is not assigned. That's what's throwing error. So on flow select and plus यहाँ पे हम empty JSX पास कर रहे हैं. तो on flow select पे हमें क्या करना है? हमें अपडेट करना है. क्या अपडेट करना है? Constant on. हमें अपडेट ऐप कॉल करना है. Now this thing we are expecting a floor value will be there. So floor will be there, which will be an integer. Okay, we're not saying that's good. So we don't have to define what kind of value. And so here we'll get the previous state.
And since we are just returning, so this is the way to update individual property, right? So on flow select, we want to just update the selected flow. We don't want to update the other state properties, right? So what we'll do is, okay, and on flow select, we'll just changing it to updating the value, which will be uh, dot 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 previous state, expanding the object. If you don't know how does triple dot works, we have discussed in the last session, and you can go check it out there. Then selected flow, which will be equal to previous state dot selected flow, comma, what will the value? What will the value? Oh, obviously, right? That's what you're passing. And we have just updated our or yeah. So यहाँ से क्या होगा कि हमने when you click it when you click on this up and down, that time we'll be updating this flow select. Now the same thing is supposed to happen from liner also. So यहाँ पे भी हम pass करेंगे and we are assuming this dial as part of this elevator. So now there's a one more thing to have like open and close thing. Now you can press open and close, but if the lift is in moving state, in that time you cannot uh, it will perform nothing, right? So it will only perform when lift is a stationary. And in our case, it won't take much time. So for now, it'll just keep it. And this is one thing we'll be handling later. Fine. Now, elevator should not be open right now. Let's move it to close. Process में color it. Come on, guys. Okay, हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि we are very slow in this. Check Grayish. Yeah, looks fine, right? We need one more thing here that this is the elevator, this is the thing. Okay, we need a background color for elevator also, not the elevator, the open part, the space between. Okay, let's see how does it look like when there's an open. That looks not so good. Okay, when there's an open, that time we need a. Let's go over there. Go back here. When there's an open, that time we need a background color of say yellowish green. Yellow was looking better. So it looks better now. And I think we got our all component right. We have elevator which opens and shut down. The and it looks like an elevator. We have different dialers buttons. We have option to open and close. Now comes the logical part. We will be tying up all the screws, all the strings, not the screws. Okay, so we'll be trying all the strings together. Now we have all our components lying here and there, and now we have some of the logic also implemented. Now we have our state ready, and we just integrating everything together, getting one interpiece, one masterpiece. Okay, थोड़ा लंबा हो गया आज और बट ये सेशंस कोडिंग सेशंस बाउंड टू गो लॉन्गर है जिनको छोटा करोगे तो आपको बहुत ब्रेकेज देना पड़ेगा एंड हम ब्रेकेज देंगे तो फिर चीज़ें भी आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला काम हो जाएगा तो मिस होती जाएंगी तो
भी करो यार, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा चला लो, like the whole point is to make this a chill stream, understand and relax. Maybe grab a couple of drinks or something. Okay, should be investing time on some other issue. I'm investing time here. But उस पे तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ. Okay. So button click में हमें एक value और चाहिए, which is the floor value, and buttons is integrated in okay. App.js पे we have selected floor and we need the current floor value also. And that is lift position, right? So we'll take a lift position, we'll pass it to elevator. Not to the elevator, we have to pass it to the floors. So we have to pass it here. No, we have to pass it here. Lift position. And 0 will represent top here and 10 will represent bottom here, because we are not doing from bottom, we're talking from value from top. What we can do here is, since we're keeping lift position 10, we can say 10 minus, yeah, 10 minus app rate dot left position. And starting, so it will be 9, because starting from 0 bros. Now we have elevator position. So इससे क्या effect पड़ेगा? We can go to elevator, we can have a position value, we can have a props here. Okay. And we have hard coded a value, right, with the top value, which is 420 pixel, which now we don't have to hard code it. What we can do is we can have here a constant lf styles, and we can just use that here, and we can have okay. This ls styles will have basically a property called top, which will be calculated dynamically, which will be uh, uh, which will be multiplied by, I think, 20. Wait a second. So if it's a ninth position, the value will come as zeros, and in case of 0, then it will be 220, and every first position will increase up plus 10. So okay, so it will be prop start position is there. 50%. We need the key value should be same, so it should be something as lift position. If we give a wrong key value, it won't work, so it will be lift position. Uh, Top lift position is equal to the plus, okay, multiply by 100 and plus 220. And styles is equal to, this is the way we are giving inline styles. जो हमने पहले बात की थी कि inline styles क्या होती है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप देखो एक मैजिक चीज, मैजिक क्या है, क्या बोल रहे हैं, now it moves to top, right? Now I can control this whole thing just by app chase state. Now, what if I change it to third? Be going down. The errors are 5.
Intermediate template. Okay, I have templated this. What is the intermediate idea? This old. Okay, so that version we are passing as 3, and it should come on third floor. Now it's taking this thing. Okay. ये सेंट्रल इंस्पेक्ट करते हुए डिबग करते हैं it's supposed to work, right? It's not working. चाहे से ऑब्जेक्ट आता है फील्ड वैल्यू देखते हैं फील्ड वैल्यू में क्या आ रही है इसकी टॉप पोजीशन 220 पिक्सल आ रही है हम्म maybe I'm missing something very basic here in the syntax issue like just like go check here holding the people is very hard look no I don't want casting I want to do it this time I want to show instead work without okay okay let's try it this way this is the same thing right don't tell me guys this was the issue okay so मुझे लगा था कि सिंटैक्स कर रहा है that was the syntax error basically we can go back to our original code go move there move here move here move here move here move here move here okay so this will be just the style not the styles and stay down here right? And so it will be Android into 3 Android plus 200 is 520 should be here okay so it's coming as 6 okay so 0 1 12 go back to here so in case of 0 it will be like minus 10 okay it's coming here so in case of 0 it should be 9 into 20 correct this should come down here in case I'll change this to say third move it up what if I make it 5
here. So its position is not changing, it's always attached to the, if the value is always coming 11 to 0, which is kind of wrong. And it's because app state and its def9 value, and 9 minus 9 is 0, and 0 plus 20 is okay. Why is giving me wrong value here? Let's see. So we can do this, guys. We can just do a console.log, and we can just say, give us the value of top store. So this kind of structure, if you not use seeing this kind of string like slash slash then some template inside it, it's called string templating, and it's pretty flexible thing to use. मतलब आजकल तो मैं हमेशा इसको हर जगह यूज करता हूँ because very too easy to do calculation in your strings, and you will be saving your raw space and performing all your the code will look neater, and you can do a lot more stuff than just attaching multiple strings together. You try it out if not used it. I'll see if I can just do the top start left portion here. And let's see what is the value. Coming is 9. First time it's coming is undefined. Okay, so we need to put definition is equal to, should be here if it's okay, it's coming as 9, but ideally it should come as 0, right? So left portion is here. I'm saying 9 minus left portion, but the log value it is coming as weird. Left portion is 0, it should come as 0. Oh, it's always coming 9. Wow. Oh, yeah. Don't tell me. Let's do this. Hmm. Yeah, we change you 0. Okay. And my bad. Uh, I changed value here. Now it won't change because there's no props are changing, so there's no refresh will fire up. Uh, it's fine. This is working now. What we have to do is uh, just invert it. So basically, if I give a 9 here, and in that elevator, I have to put logic that uh, constant lift
वो floor is floor is equal to, we say, 9 minus, and this thing will change to floor, and this will be removed, and okay, I think we're good to go now. So 9 minus 9 is 0, 0 from here, but refresh नहीं कोई बात नहीं, तो let we have to come here and make it 9. Perfect, guys. क्या time हो गया? Okay, let's do one thing. ज़्यादा नहीं खींचते हैं, बोरियत हो जाती है. We'll try to complete as much as possible in 15 minutes, और इसका जो भी बचेगा we'll finish on next Wednesday or probably a day before it. तुम लोगों को मजा आएगा तो हम कोडिंग कभी भी कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. Uh, yeah, let's do this. And मेरी कोशिश रहेगी कि अभी 15 मिनट खत्म कर दूं, बट जैसे आप देख रहे हो कि मैं बहुत छोटी मोटी चीज़ें के हिकअप्स निकाल लेता हूँ. It will happen because I'm new to this thing. I'll be more prepared next time, and I also want to explain you what I'm doing. I know it's a big thing to what I'm doing here, but कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है ना. क्या पोयम थी? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो फेंक के देखो यारो. ओके. There's a person called Ben Award. He said कि issue होता है कि when you're doing live coding, you'll get distracted with a couple of things, and then it's not fun. And I want to prove him wrong. So I need you guys' support. I want to make it fun and interesting. I'll try to figure out some ways. धीरे धीरे हम इसको बढ़ा करेंगे. हम लोगों को इस पे involve करेंगे, आप लोग को भी. Like we'll mix it, we'll get a single code sandbox shared to all people, and then we can put multiple components at same point of time and build something together. उसमें मजा आएगा. बट उसके लिए व्यूअरशिप चाहिए, वो धीरे धीरे होगा वो भी. Okay, so yeah, click clubs, okay. पहले हम लोग इसका लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, देन विल मूव टू दिस लॉजिक, एंड देन विल मूव टू दिस लॉजिक पार्ट. ओके. तो इसका लॉजिक कैसे काम करेगा कि हमारे पास डायलर है, डायलर में इंडेक्स है, डायलर में इंडेक्स है, इंडेक्स में डायल है, डायल में ये है, एंड इसमें एक ऑन क्लिक डाल देंगे, तो इट विल बी ऑन क्लिक. एंड ऑन क्लिक ऑफ दिस व्हिच विल बी देट हैपन इज कि इसमें दो वैल्यूज आएंगी, वैल्यू एंड selected flows, and if constant index then is equal to, you know, is selected is equal to selected floor dot index of value is not equal to -1. बेसिकली ये चेकिंग कि यहाँ सेलेक्टेड फ्रॉम हमारे पास डेटा आता है, या सेलेक्टेड फ्रॉम हम चेक रहे हैं कि अगर ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं. तो अगर ये वैल्यू इस एरे में प्रेजेंट होगी तो विल गेट अ इंडेक्स आउट ऑफ इट, एंड इफ देयर इज नो वैल्यू इज देयर देन विल गेट इंडेक्स ऑफ -1. इफ देयर इज अ इंडेक्स ऑफ -1 देन वी वैलिडेटिंग अगेंस्ट इट. अगर उसकी वैल्यू -1 नहीं है तो मेक इट सेलेक्ट एज ट्रू, अगर वैल्यू उसकी -1 है तो मेक इट एज अ फॉल्स. नाउ इट्स अ सिलेक्टेड वैल्यू, व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली दिस, एंड यहाँ पे हम एक कंडीशन डाल देंगे. इसको हम देखो पावर ऑफ स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग काम आएंगे अभी. We'll do this, and then what will say? What is it? Will say selected है, then we dial. Else dial. Actually, what we can do is we can just move dial here outside, and if it's selected है तो यहाँ पर हम selected दे देंगे, and if
it's not selected, then we'll I will pass anything. It'll empty string. Okay, and then on click will pass on dial click. We need a parent method to update it. Basically, okay. Issues अभी. Yes, it must be only assigned non-empty expression. Okay. Okay. Hmm. Wow. Ile. Kus. What is the issue here? Okay. We have this value. Okay. Oh, so I'm sorry. Okay. That's it. Problem is. Okay. So let's do this thing. I think I'm missing something here. This name is equal to. Oh, okay. I think I got it. What I'm doing wrong here. Probably I'll just try that thing before closing on this. Okay, and it should go here. Yes. Yep. And the dial and this is one thing, and I don't need dial here, and just remove this, and it can be an empty string. Get float or index off, whatever it is. And that's it. टेंशन क्यों लेते हो लो खुश हो गया काम हमारा अगर मैं क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा डायल क्लिक लेकिन डायल क्लिक होगा डायल एक्टिवेट भी करना ठीक है तो हम डायल एक्टिवेट करते हो क्या करेंगे फिर सिलेक्टेड प्रॉपर्टी रहेगा और कॉल इट एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड क्या एक्टिव होता है एक्टिवेटेड एक्टिव किया हमने यहाँ पे इसको वैल्यू सेलेक्ट की यहाँ पे स्टाइल में गए एंड देन वैसे ये भाई डॉट डायल डॉट एक्टिव अगर दोनों साथ में हो जाए तो बैकग्राउंड कलर ही आप चेंज कर दो वो वाला कर दो हो जाएगा now just to test it out what we're going to do is pat pause what you can do and for you we're going to give some values here we're going to give some values for 7 I'm going to go 5 and since we are getting the value in the dialer here so this will have a props which will be having selected floor and this selected floor we can copy from here and this selected floor will pass to each tile and basically to floor is equal to actually we can give an active or you can pass the active flag from here okay we'll do it later but you don't need to pass the whole object we can directly do it by just passing a flag from here and perform the check here तो जो for loop में check perform करके हम कर सकते हैं ठीक है नहीं करेंगे ऐसे करेंगे no can you see that oh
You cannot see that. How bad, guys? Let me show you. ये जब ढंग से स्क्रीन रेंडर नहीं होती है। ओके, दिखाऊंगा आपको, डेमो दिखाऊंगा बिल्कुल क्या हो रहा है अभी। आई थिंक यू कैन सी इट राइट। So as you can see, my 7 is 5 and is coming as activated. Okay, because I've put the logic for it. So it's going to work. तो हमने एक एक्टिवेटेड लॉजिक दे दिया है, हमने एक ओपन क्लोज का लॉजिक दे दिया है, हमने मूविंग का लॉजिक दे दिया है। मूविंग चेक कर सकते हैं नाउ। हाउ when you click on this right on dial click, and that time we want to update the flows, and for update the flows what we need is a method to update flows, and that is on flow select, and on flow select will pass to everything which is for elevator and dialer also. And dialer, when we go dialer to so in dialer we can pick the property called on theta and on flow select, and on flow select we alt sorry on flow select will pass down here. uh, the better way to do it, since we're passing all the props property उसको वापस से define करने से अच्छा, this is a dumber way to do it. Probably what we want to do is define the props, and then we can do like this. तो जो ऑप्शन है तो यूज करो उसका ना। Wait, इतना बड़ा बड़ा क्यों लगता है, छोटा कितना प्यारा लगता है। आजकल तो कोड की सुंदरता ही मैटर करती है। when you go for interview, people will see the aesthetics of your code, how good it's looking. People are hiring code ninjas, and I don't know what. But how can a person be a ninja? ठीक है भैया, अपने अपने फंडे हैं। Now we'll just pick this value on flow select here, and whenever a dial is clicked, so we'll be having value, and we'll be setting this value and value. तो पे मैं एक और लॉजिक लगाना सोच रहा हूँ कि वो डबल क्लिक का अभी नहीं, क्योंकि दिस इज एडवांस थिंग, नॉट all the uh, all the elevators have it. So in the new elevators, right, in the advanced elevators, what you see is कि जितने भी, if you double click on the floor value, it will go off. So suppose I'm in 5th floor and I've pressed for 9th floor, and in the 9th floor, if I select double tap twice, like if I'm in the dialer and double tap twice, it will go off. आपने गलती से कोई फ्लोर दबा दिया एंड आप वहाँ पर पहुँचे नहीं हो एंड यू वांट टू stop over there, you can just double tap over there and go off. This same functionality we'll try to implement here also in an advanced level. Basically, first step हमारा कि basic सारी functionality काम करनी चाहिए as an elevator. Then second, we'll modify it to advanced elevators, and then third step will be to look into the more uh, advanced flows. Like खुद का अगर हम एलिवेटर बनाते हैं तो उसको और कितना एडवांस बना सकते हैं, लाइक जो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है, राइट? सो थिंक ऑफ समथिंग विच इज not available in the current generation elevators, and we'll try to implement it as advanced version, like next version what we are expecting. Cool. कुछ ये सेटअप हो चुकी है मुझे। यहाँ पे मैं एरर क्यों आ रहा है कि on plus not a function. Why it's not a function, dude? We dial and it's in the dialer, and dialer passing from here, and on flow select is there. The on flow select is a function. Okay, so let's just create. Basic look view initial per damage first load में don't get anything. Now, it's weird. Okay, so oops, my value sorry यहाँ पे. Let's do one thing. So one thing is log.
dialer props and say props and यहाँ नहीं आएगा सिंपल यहाँ आएगा यहाँ पे आते हैं इसको यहाँ पे देते हैं ओके एंड then what we do is कि यहाँ पर हम आते हैं props करते हैं इसको and इसको उठा के this whole thing can be props and then we can say props dot so props dot value props dot value mm-hmm. इतने एडवांस हो चुके ना कोडिंग डायरेक्टली इन द ब्राउजर लेटेस्ट की ओके फाइन तो डायलर प्रॉप्स में हमें केवल वियर्ड ओके सर फर्स्ट हमें डायलर प्रॉप्स में आ रही है और नहीं यहाँ पर दिया लॉग कर दिया ना अब हम तो टाइटल करते हैं तो डायल प्रॉप्स ये आ रहा है डायलर प्रॉप्स क्या है बढ़िया डॉट okay, so dialer props contains selected floor on for select but dial props when it's going okay going value 7 8 9 and then second time it's going value I got it guys हमने ऐसे क्या गड़बड़ की है इसमें क्योंकि हमने यहाँ पे कॉम्पोनेंट माउंट पे नहीं कर रहे हैं हम कॉम्पोनेंट इनिशिएशन भी कर रहे हैं जब कॉम्पोनेंट रेंडर नहीं हो तब भी हम इसको फॉर लूप चला रहे हैं ठीक है इसको हम कैसे अवॉइड करते हैं एंड इट्स अ गुड गुड वे की गुड थिंग दैट वी कॉट दिस एरर हियर बिकॉज नाउ वी कैन लर्न अबाउट द यूज इफेक्ट इन हाउ टू डू कॉम्पोनेंट माउंटिंग इन अ स्टेटलेस कॉम्पोनेंट ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास काम आएगा इंपोर्ट स्टार And then what we can do is say, okay, boss, just give me a get dot use effect edit, and in here we'll do say key fire it, and where it's closed, here's the date, and then set and then set. Okay. So empty array define key. We want to run this once. We don't want to run this multiple times. And it won't run second time. But if you see here, dialer props are coming and dialer props also should come. So it will be called only once and not dial props. That's what coming up. Sure. Okay, yeah, I got it. What is the issue? So basically, what we are waiting here is first time we'll run this and then the dial won't be there. Maybe the buttons are not there. That's not rendering up. Hmm. Oh, sorry.
Hmm. तो ये डॉट यूज इफेक्ट यहाँ पे कॉल होगा यहाँ पे ये आएगा इट शुड कॉल पॉज योर बाइन एंड कॉल दिस इज so dial will be created and buttons waiting push but pointing to oh I think got it so let's do it like this buttons constant it buttons is equal to introduce callback so then here and then this will be there and then this will be there and there and closing and giving this independency here and we define the same constant here and then we'll be calling this for loop here and and this is not needed, this is not needed, and this is okay. The actors call back a misdependency of props. Why it's like misdependency? Okay, to close it though. I'm missing something very basic here and not good. Title is here, which is right. What else? But oh, वो फिर मेरी वो ये वाले मेरे क्लिप बनने वाले थे तो मुझे कि जब आप बना रहे हो आपने फंक्शन कॉल किया बट इफ यू डोंट रिटर्न इट हाउ इट वर्क राइट मतलब इट्स कमिंग देयर बट गेटिंग द डायल प्रॉप्स आर कमिंग एंड प्रॉप्स तो इस केस में हम क्या करेंगे इट्स सिंपल हम यहाँ पर जाएंगे और हम एक चेक लगा देंगे भैया इफ इट्स देयर डू इट okay so what we are trying to do is कि if dot props dot index dot float is there then उसके index of करने के check करना है else it will be false that for false rather than 7 and 5 uh, थोड़ा सा अपन और कर देते हैं
Hey, much likely will use this and use this and then false. Okay, हमारे props सही है props में क्या है 075 आया है तो what next props not select for है but ऐसा क्वेश्चन ना क्या है literature is equal to empty to props and for select if fatigue it's the same thing no it's feeling shouldn't be oh shit. Okay, guys, this is already time is okay. We are here. We're getting this. We're dialogue. It's already okay. Oh, oh, don't tell me because I didn't pass it over there. It was so long. Oh, okay. So basically, जो इस first वाले buttons का नहीं problem issue आ रहा था. And now it's all good to go, guys. So now we have this on click, and when I click here, should yeah, okay, working fine. एक चीज़ हमें और करनी है कि हमारे डायलॉग के ऊपर जो है डाला इट्स कमिंग एज अ पॉइंटर वी नीड टू मेक इट अ कर्सर so we'll just go in that class style and say pointer cursor. Yep, and we are good to go. Right. Da, 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 and it's all looking good. It has like a human hand जो press कर रहा है, right? This is what you want. So we are almost 70% complete to problem, and we'll be continuing this problem on next Wednesday. We'll be finishing on the next Wednesday. Till that time, guys, hang on, learning, and write down in comments if you have anything to say and how you feel about this session. If you want more of